the definition once again, that there is a minor difference. A single valued function is said to be analytic, or it is called regular function, or it is called holomorphic function if at a point z0, if it possesses unique derivative at each point of some neighborhood of z0. So the difference between analytic and differentiable function is little. How both are distinguished, I just show you. In suppose if fz is differentiable at some point z0, means that f dash z0 should be exist. And when you say the function is analytic at z0, means that the function is differentiable at z0 as well as it is differentiable at every point of some neighborhood of z0. This is what the minor difference. So differentiability means derivative at exactly one point, and analyticity means derivative at this point as well as some surrounding point. Otherwise, the concept is same. So you just remember that analytic means it is a differentiable, perhaps at one point as well as in some neighboring point. So now we define, we'll see some notes or remark on analytic function. Number one, if uxy and vxy are single valued functions such that ux, uy, vx, vy are continuous throughout the domain D, then CR equations means Cauchy-Riemann equations, that is ux equal to vy and uy equal to minus vx, are both necessary and sufficient conditions for fz equal to 2 plus iv to be analytic, and in this case derivative is given by f dash z equal to ux plus ivx or vy minus iuy. So what you want to say, that for given function f of z equal to u plus iv, this is analytic in a given domain D if and only if, number one, all partial differentiation of u and v
are continuous, and number 2, we must have ux equal to vy and uy equal to minus vx. So this is what the exact same necessary and sufficient condition that we derived for differentiable function. ये वही कंडीशन है जो हमने डेरिवेटिव के लिए डिफाइन किया था. सो जो कंडीशन डिफरेंशिएशन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, द सेम कंडीशन विल बी necessary and sufficient for analytic function. Remember, analytic function is a differentiable function. So whatever the condition for derivative, same will be for analytic function. यहाँ पे एक थोड़ा confusion था, कल एक question था, if the function is differentiable, then CR equations, look at this, if the function is differentiable, then the necessary and sufficient condition are both should be satisfied. मतलब उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए और इसके साथ सीआर इक्वेशन भी होने चाहिए. अगर ओनली सीआर इक्वेशन दिए हुए हैं, इफ ओनली सीआर इक्वेशंस, then it is not both necessary and sufficient. It is only necessary. CR equation as well as continuity of first order partial derivative, this both should be holds at a time. तो याद रखना, only CR equation is necessary condition. It is not sufficient. हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें फंक्शन होगा f of z. In that function you will get the CR equation, however the function is not differentiable. So right now you remember analytic is nothing but differentiable function. So whatever the condition for differentiable function, same holds for analytic function. Second thing, in case of analytic function, the value of f dash z, it is given by ux plus ivx will be same as vy minus i uy. ये कहां से आया? तो ये हमने प्रूव किया था ux plus ivx. If you use here CR equation, so ux equal to vy. So you put here ux equal to vy and vx equal to, from this relation you will get minus uy. So put here minus uy, so it is minus I uy. So both are same. So now you have to keep one things in your mind always. Whenever you will come across the term analytic function, for given analytic function, CR equations are always true. This is one remark. Number 2, the real and imaginary parts of an analytic function are known as conjugate functions of each other. Means if the function is analytic, then its real and imaginary part are called conjugate functions of each other. Look at this. If fz equal to u plus iv is analytic, अगर ये फंक्शन आपका एनालिटिक होता है तो रियल पार्ट मीन्स u, imaginary parts v are known as conjugate functions of each other. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, याद रखना हमने आगे टर्म डिफाइन किया था कंजुगेट नंबर. सो व्हाट इज द कंजुगेट नंबर? Conjugate number is a different thing.
if you have any complex number z equal to x plus iy, then the conjugate number z bar equal to x minus iy. Replacing I by minus I, whatever quantity you are getting, it is called the conjugate number. And conjugate functions are real and imaginary part of the analytic function. Suppose if you ask to write the conjugate value of this function, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको पूछा है कि find the conjugate value of the function, तो conjugate value of the function is fz bar equal to u minus iv. Look at this. Conjugate value is replaced I by minus I. But in case of conjugate function, real and imaginary part of analytic function means आपको बोला है कि u is a conjugate function of v. तो इसका मतलब ये हुआ कि u plus iv एनालिटिक हो गया. अगर आपको बोला है v is a conjugate function of u, तो u plus iv एनालिटिक हो गया. समझ में आ रहा है? So conjugate value is different, conjugate function is different. So this is one part you have to remember. Real and imaginary part of analytic function are known as conjugate function. Now we next define the term harmonic function. So what is harmonic function? So a single valued function, a real valued function hxy of two variables x and y is said to be harmonic function in a given domain of xy plane if it satisfies the Laplace equation in two variables. Means if you are having any function of two variable, then this is called the, इसको बोलते हैं harmonic function, provided this function satisfy the Laplace equation in two dimension. Sir, what is Laplace equation? So that is this equation. These conditions should be satisfied. Del square h by del x square plus del square h by del y square equal to 0. Means h का double derivative with respect to x plus h का double derivative with respect to y, दोनों का addition 0 होना चाहिए. Same you can write in this notation hxx plus hyy equal to 0. For example, suppose you are given h equal to x square minus y square. You have to check whether this function is harmonic or not. So we obtain del h by del x. So del h by del x 2x and del square h by del x square is 2. Then del h by del y with respect to y, keeping x constant, so minus 2y. Del square h by del y square equal to minus 2. If you take sum of these two quantity, then it is 0. Okay, so del square h by del x square ये हमने यहाँ से निकाला 2 and del square h by del y square हमने निकाला minus 2. इसका एडिशन हो गया 0. So this function is harmonic. कोई भी आप ले सकते हो. For example, if you take say phi equal to e raised to x cos y, you have to check whether this is harmonic or not.
So we obtain phi x with respect to x differentiation e raised to x cos y. Then phi xx again with respect to x e raised to x cos y. Then we obtain phi y with respect to y. तो इसका with respect to y, इसका with respect to y, cos का हो गया minus sin. So minus e raised to x sin y. फिर से निकालेंगे phi y. So again with respect to y, so minus e raised to x cos y. Now take the summation phi xx plus addition phi y. So what is phi xx? E raised to x cos y. What is phi y? Minus e raised to x cos y. Addition is 0. So this function is also harmonic. This function is harmonic. Clear? So in order to check what is the harmonic function, so you have to check out the double derivative, and this particular equation, it is called the Laplace equation. It is not Laplace transformation. Do not get confused with this term. Okay, Laplace equation is different thing, and Laplace transformation is also different thing. So this is Laplace equation. So Laplace equation is this one. तो ये चेक करना है, first definition. Then second thing, remember a harmonic function. So sir, what is the use? So harmonic function is quite useful in the theory of applied mathematics, and that theory, it is called the potential theory. When you will study your subject heat and mass transfer in either in this semester or next semester, or when you will study the fluid flow problem in mechanical engineering, or the theory of the fluid mechanics, or when you study CFD, computational fluid dynamics, in all that subjects you will come across such type of the potential theory, and in that it is quite useful. So right now we are not discussing the technical part that you will study in your regular subject of the mechanical engineering. So second thing. Next. So कैसा होगा? तो for example, if you look at in heat mass transfer, then steady state temperature conduction in a plate is a harmonic function. वो क्या है हम लोग right now are not discussing. When will come the problem, we'll discuss. So at present you have to remember only harmonic function. So you have to check out this condition. The next definition is harmonic conjugate function. Now you remember, we define two terms. One is conjugate function. So what is conjugate function? If f equal to u plus iv is analytic function, then u and v are called the conjugate function. And second, we define the harmonic function. Harmonic function, h is called harmonic function if so this is conjugate function and this is हार्मोनिक फंक्शन, याद रखना है. थर्ड डेफिनेशन अभी आ रहा है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन. सो व्हाट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन? सो इफ यू आर हैविंग टू हार्मोनिक फंक्शन, से h and t, both functions are harmonic, means इसका भी लाप्लास इक्वेशन मिलेगा, इसका भी लाप्लास इक्वेशन मिलेगा. means you should have hxx plus hyy equal to 0 and txx plus tyy equal to 0. Both are harmonic. So these are harmonic.
And if f equal to h plus it is analytic function, you remember, number one, if h and t are harmonic such that the corresponding complex function h plus it is analytic function, then h and t are called harmonic conjugate function of each other. So look at, this is the term harmonic function as well as conjugate function. Okay. So in case if this is analytic function, means if h and t are harmonic conjugate functions of each other, then this is analytic. And once it is analytic, then you can write its Cauchy-Riemann equation. So what are the Cauchy-Riemann equation for h plus it? So h plus it is hx equal to ty and hy equal to dx. मैंने आपको आगे भी बोला था कि u प्लस आई भी अगर एनालिटिक होता है तो आपको शॉर्ट में याद रखना है ux इक्वल टू vy, uy इक्वल टू माइनस vx. So what is the conclusion? If h and t are harmonic conjugate functions of each other, then we must have this relation, right? This is the definition. If hxy and txy are harmonic functions such that h plus it is analytic, then h and t are harmonic conjugate functions of each other. And if one is known, then we can find another one by using CR equations. वो क्या कहता है कि अगर दो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शंस में से एक हमको दिया हुआ है, if one function is known, we can obtain the other function. तो कुछ ऐसा हो गया कि आप suppose h and t are harmonic conjugate function. ओके इसमें आपको सिर्फ h की वैल्यू दी हुई है, h is given, the value of t is not given, this is not given. तो h के ऊपर से आप t निकाल सकते हो, या तो फिर आपको t दिया है तो आप h निकाल सकते हो. यही लिखा है, if one function is given, one is known, then we can find the another one. और कैसे निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आपको CR इक्वेशन यूज करना है. कौन से CR इक्वेशन है हमारे पास h और t के लिए? अभी हमने लिखा था hx इक्वल टू ty and hy इक्वल टू माइनस tx. बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन फाइंड. अगर आपको h दिया हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो hx और hy की, तो t मिल जाएगा. कैसे निकालना है बाद में प्रॉब्लम में हम देखेंगे, बट राइट नाउ यू नोट डाउन दिस वन. Hence h and t are harmonic conjugate functions of each other, then this is what the CR equation, hx equal to ty and hy equal to minus tx. So this is what we define. Another term, harmonic function, conjugate function and harmonic conjugate function. Okay. Now we are having some properties of analytic function. It is some kind of the results. This may be asked in examination for 2 to 3 marks. Property number 1. If fz equal to u plus iv is analytic function, then is an analytic function in domain D of Z plane, then its component functions u and v are harmonic in the same domain D.
तो क्या कहना चाहता है वो कि अगर आपको u प्लस आई वी इज एनालिटिक हो गया, इफ u प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, देन वी आर बाय डिफॉल्ट हार्मोनिक फंक्शन। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो हम एज्यूम कर लेंगे हाउ टू प्रूव दिस वन, कि भाई u प्लस आई वी एनालिटिक, देन u एंड वी आर हार्मोनिक। प्रूफ। So let f equal to u plus iv is analytic। क्या प्रूव करना है हमें? u एंड v आर हार्मोनिक इन द रिंग। हार्मोनिक मीन्स हमें चेक करना है कि u एंड v satisfy the Laplace equation. Now once it is analytic, then I told you that once the function is analytic, you will always get the CR equation, because analytic means differentiable and differentiable means CR equations are satisfied. So therefore, by CR equations, what we are getting, ux equal to vy and uy equal to minus vx. It is called equation number 1. This is equation number 2. So we are having this information. Now we have to prove first is harmonic. So to prove u is harmonic, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? To prove the given function is harmonic, for u क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें? हमें प्रूव करना पड़ेगा u x x plus u y y equal to 0 in case to check the function is u is harmonic. So u का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा, u का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना पड़ेगा, दोनों का एडिशन हमें 0 शो करना है. So how to prove? So right now we are having u का single derivative x is available, u का single derivative y is available from these two equations. So what we proceed to find with respect to u का डबल डेरिवेटिव, इक्वेशन 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे कीपिंग y कांस्टेंट, एंड इक्वेशन 2 का विथ रिस्पेक्ट टू y. So now differentiate 1 and 2 partially with respect to x and y respectively. Respectively का मतलब 1 का with respect to x, 2 का with respect to y. So what we are getting from equation 1, u x x का विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u x x. ये क्या है? v का विथ रिस्पेक्ट टू y दिया हुआ है और इसका हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो कुछ ऐसा है हमारे पास कि vy इक्वल टू डेल v बाय डेल y. नाउ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेल बाय डेल x ऑफ vy, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल स्क्वायर v बाय डेल x डेल y होगा कि नहीं? एंड दिस यू कैन राइट v xy in short. So this term, it is v x, and from second equation u y y इक्वल टू, इसका विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, so minus v y x. Now adding these two term, so this implies that u x x plus u y y equal to v x y minus v y x. Now can you say what is the value of this term?
So, 0. so you have studied in partial differentiation that for any second order derivative del square v by del x del y equal to del square v by del y del x. This, if you interchange the order of the partial derivative, the value remain same. Okay. So here again the vxy equal to vyx. So both are same. So it is 0. So therefore, u satisfies Laplace equation implies u is harmonic function. This is proof. ये हो गया. So real part is harmonic. Now you can similarly can you say how to prove the second part? मतलब v कैसे प्रूव करना है? v कैसे प्रूव करेंगे? So for v के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? vxx plus v y. तो अभी इक्वेशन 1 का विथ रिस्पेक्ट टू y कर लो, इक्वेशन 2 का विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो. तो vxx कितना हो जाएगा? माइनस uxy एंड vy कितना हो जाएगा? प्लस uxy. एडिशन कर लो, you will get the 0. So similarly you can prove second part. ठीक है, तो दूसरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है. You can write similarly vxxy. So one thing you have to remember here, that if u plus iv is analytic, then u and v are always harmonic functions. Now look at this. Converse of above result may not be true. ये क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आता है कि prove that if u plus iv is analytic function, then u and v are harmonic function, but converse of above result may not be true. या तो क्वेश्चन पूछेगा कि is the converse of above result is true. तो converse of above result means what? अभी हमने क्या प्रूव किया कि if fz equal to u plus iv analytic implies that 2v are हार्मोनिक. ये हमने प्रूव किया. अभी इसका रिवर्स चेक करना है. यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका रिवर्स सही नहीं है. रिवर्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे होगा रिवर्स इंप्लाइज, इस तरह का. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन, देन u प्लस iv should did not be analytic. Converse may not be true. may not का मतलब कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है. ओके, सो रिवर्स मे नॉट बी ट्रू. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज सिंपल मीनिंग? दिस इज नेसेसरी कंडीशन. फॉरवर्ड इंप्लाइज मीन्स नेसेसरी कंडीशन एंड रिवर्स इंप्लाइज मीन्स सफिशिएंट कंडीशन. तो प्रूव करना है तो हमें प्रूफ देनी पड़ेगी, लेकिन डिस्प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? 70 नंबर 70 नंबर. यस सर. हाँ, अगर किसी को डिस्प्रूव करना है, गलत साबित करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. अगर आपको किसी ने बोला है कि भाई सेम 3 मैकेनिकल का सीवीपीडी का रिजल्ट 100% है, तो क्या कैसे प्रूव करना है आपको? 100% है तो कैसे प्रूव करना पड़ेगा?
All the students are pass. हाँ, तो कैसे वो चेक करना पड़ेगा ना कि हर एक लड़का पास हुआ है कि नहीं. Yes, yes, sir. तो यू हैव टू चेक आउट ईच एंड एवरी रिजल्ट. Points. ठीक है, Result. तो ये हो गया नेसेसरी कंडीशन कि 100% पास हो गया, मतलब 100% रिजल्ट मीन्स ऑल आर दिस. अभी मैं कोई बोलता है कि भाई सीवीपीडी सेम 3 का रिजल्ट 100% नहीं है, 100% रिजल्ट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? 50 नंबर, 50 नंबर, नहीं 30, 32. यस सर। हाँ, अगर आपको बोला है कि भाई आपके क्लास का रिजल्ट 100% नहीं है, प्रूव करो, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? सर हम उसको रिजल्ट बताएंगे, हाँ, रिजल्ट से, किसका रिजल्ट बताएंगे? स्टूडेंट्स का। देखो, आपको अगर बोला है कि आपका रिजल्ट 100% है, आपको हर एक लड़के का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा. यस सर। लेकिन आपको बोला है कि आपको 100% नहीं है, तो कम से कम सिर्फ एक लड़का दिखा दो कि जो पास नहीं हुआ है. हाँ। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अगर किसी को प्रूव करना है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्रूव करना है तो सिर्फ हमें एक ऐसा एग्जांपल देना पड़ेगा कि जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है. अगर एक प्रॉब्लम का हम एग्जांपल दे दें तो द रिजल्ट इज डिस्प्रूव, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे करना है. तो ये याद रखना प्रॉब्लम खास कि कन्वर्स ऑफ अबव रिजल्ट मे नॉट बी ट्रू, मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन का पेयर देना पड़ेगा कि जो हार्मोनिक हो, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन u प्लस आई भी एनालिटिक ना हो. तो कैसे प्रूव करेंगे? सो आई विल टेक वन सिंपल पेयर ऑफ द एग्जांपल so you can understand easily. So for example, suppose I will take u equal to x square minus y square, and I will take v equal to e raised to x cos y. Now are these two functions harmonic? Are these two functions harmonic? Number 4. Enrollment number 4, Jaimin Bhad. Yes, sir. Are these two functions harmonic? Yes, sir. कैसे? Sir, cos कैसे harmonic. होंगे ये हार्मोनिक? मैंने अभी आपको जब डेफिनेशन में ये दो फंक्शन लेके समझाया था, इसको h और इसको phi बोला था कि नहीं? So these both are harmonic. You can check it. यही सेम प्रॉब्लम है. तो ये हार्मोनिक हो गया. अभी हमें चेक करना है कि वेदर u प्लस आई वी इज एनालिटिक और नॉट. तो इसके लिए हमें CR इक्वेशन लगाने पड़ेंगे. तो CR इक्वेशन क्या होगा? ux इक्वल टू 2x, uy इक्वल टू माइनस 2y, vx इक्वल टू e रेस टू x cos y, और vy इक्वल टू माइनस e रेस टू x sin y. अभी चेक करो इसके CR इक्वेशन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं. तो मैंने आपको क्या समझाया था? सिर्फ आपको पहले लिख देना है CR इक्वेशन. तो ux इक्वल टू vy होना चाहिए एंड uy इक्वल टू माइनस vx. लेट अस चेक. दिस इज ux and this is vy. Are these two equal? No. So ux is not equal to vy. uy equal to minus 2y and vx equal to e raised to x cos y. Are these two equal? No. No. So CR equations are not satisfied. Not satisfied. Therefore, f equal to u plus iv is not analytic. ठीक है? So this is one property you remember, that if the function is analytic, then real and imaginary parts are always harmonic.
But if u and v are harmonic, function may or may not be analytic. This is one property. Second property, important one, this is also, every analytic function f of z equal to u plus iv defines two families of the curves uxy equal to c1 and vxy equal to c2, which form an orthogonal system, or it is called the orthogonal trajectories. क्या कहना चाहता है कि अगर आपके पास u plus iv कोई एनालिटिक फंक्शन है, if u plus iv is analytic, then if you take the u equal to c1 and v equal to c2, then these two curves represent orthogonal system, or it is called the orthogonal trajectory. Orthogonal means perpendicular. Perpendicular system means आपको ये प्रूव करना है कि ये कर्व and this curve both are perpendicular to each other. So how to prove two curves are perpendicular to each other intersect? How to prove two curve? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, दो कर्व का स्लोप निकालना पड़ेगा आपको. एक स्लोप m1 निकालना पड़ेगा एक फैमिली का, और दूसरे का स्लोप मींस ढाल, vxy equal to c2, slope of the tangent for first family, so slope of the tangent to the second family curve. Then we have to check that their product is -1. ये आपने 12th में पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है, if two lines L1 parallel to L2, then what should happen? The slope are equal. And if two lines are perpendicular, then product of slope is -1. So यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove that both are perpendicular to each other. So we'll try to find the slope of these two curve. एक u equal to c1 का स्लोप निकालेंगे, v equal to c2 का स्लोप निकालेंगे, and let us see whether this is -1 or not. What is the simple concept of slope? Slope कैसे निकालेंगे? How to find the slope for the given function, for the given curve? dy by dx निकाले. Very good. Slope means derivative. Slope means हमें निकालना है dy by dx. तो इसमें से हम dy by dx निकालेंगे, इसमें से dy by dx निकालेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट, let us check whether we are getting -1 or not. So how to find the dy by dx? So proof. First we'll take u xy equal to c1. Now this is our implicit function relation. Implicit function relation. Implicit function relation. Implicit function relation आपने पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ा था, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? How to find? So taking total differentiation, so du equal to 0. C1 is a constant, constant का डेरिवेटिव 0 हो गया. Now what is the value of du? Total derivative, u is a function of two variable, so del u by del x into dx plus del u by del y into dy equal to 0. That is
ux into dx plus uy into dy इक्वल टू 0। याद आ रहा है ऐसा कुछ? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसा ही किया था आपने। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म लाने के लिए यू आर टेकिंग द टोटल डिफरेंशिएशन। नाउ यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ dy by dx from this relation. So dividing this equation by dx, so therefore ux plus uy into dy by dx equal to 0. So what is dy by dx? dy by dx is minus ux by uy. That is, you can say m1 equal to minus ux by uy. This is slope of u equal to c1. So u equal to c1, the slope is minus ux upon uy. Now can you say similarly what is the value of m2? minus Vx by Vy. So similarly, m2 equal to minus Vx upon Vy. This is slope of V equal to C2. Hence, now we'll take the product of slope. Product of slopes m1 into m2. m1 निकाला हमने minus ux upon uy into minus vx upon vy. Minus minus plus, so ux upon uy into vx upon vy. हमें यहाँ पे -1 लाना है. So to bring -1, now we use the given condition. Which condition is given? The function is analytic. So once it is analytic, then this u and v will satisfy CR equation. So now by CR equations, ux equal to vy and uy equal to minus vx. So we use this condition in this equation 1. So from 1, m1 into m2, I put the value of ux. So ux equal to vy and value of uy equal to minus vx. We keep the second bracket as it is. अभी दूसरे में vx और vy की वैल्यू मत पुट करना, नहीं तो फिर घूम फिर के वही आ जाएगा क्वेश्चन. सभी को हमें v में कन्वर्ट कर देना है. Now you can check this. vx cancel, vy cancel. So this value -1 into 1, so equal to -1. हो गया? So therefore product of slope is -1. Product of slopes is -1. Therefore uxy equal to c1
and Vxy equal to C2 are orthogonal system. System means you are projecting more than one curves. So this is second problem.